Assalamualaikum student, welcome back grade 5. We will turn the lecture from this chapter human body. Now we will start writing from this chapter human body. So first of all, open your copy and maintain your index. Okay, now how? So I can teach you. So first here is date. Okay, first you write down the date, then write down the unit number 1 and write down the name of the chapter, the human body. Okay students, after that if you complete the index and maintain your index, now come here in the front page. First write down the heading, first semester bi-monthly work has been started. Okay, if you complete this, so now come to the next page, unit number 1. Write down the heading carefully, write down the heading and be neat and clean. Unit number 1, the human body. Okay, after that now you will start working. I will. If you complete and maintain your copy, now come here. So write down first words meaning, heading words meaning, and make sure draw the line. Okay, now first word movement, हरकत करना, sense, हिस, इमोशन, जज्बात, रिकॉग्नाइजेशन, पहचान, मसल, पट्टा, ऑर्गन, आज़ा, इंटेस्टाइन, आंत, डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम हज़म, कॉन्ट्रैक्टिंग, सुकड़ना, रिलैक्सिंग, फैलना, राइट, निजात, छुटकारा हासिल करना. Okay, if you complete this words meaning, now come here. First write down the heading, short question. Now you will start from the question number 1. What happened when you breathe out? It is the first question. क्या होता है जब हम breathe out करते हैं? When we breathe out, we are getting rid of carbon dioxide at our body. हम breathe out करते हैं तो अपनी body से carbon dioxide को खारिज कर देते हैं. Question number 2. What happened you when breathe in? क्या होता है जब हम breathe in करते हैं? When you breathe in, our lungs get the bigger as they take in oxygen from the air. This oxygen is the transfer into the our blood and around our body. जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हम अपने लंग्स हमारे गेट बिगर बड़े होते हैं एंड हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र होती है हमारे ब्लड में और पूरे हमारी बॉडी तक पहुंच रही होती है. ना थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आवर मसल? कौन सा फंक्शन होता है हमारे मसल्स का? मसल्स हेल्प अस टू मूव, दे आल्सो हेल्प टू मूव thing around our body. Our heart is a muscle, it is move blood around our body. हमारे जो मसल होता है वो हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं. इवन कि हमारा जो हार्ट है वो भी एक मसल है जो कि हमारे ब्लड को मूव करवाता है हमारी बॉडी में. Now fourth and last short question is what role do the intestine play in the digestive system? So answer is the intestine help the digest food we eat, get rid of food that our body does not need. And last short question is what role do the intestine play in the digestive system? So answer is the intestine help the digest food we eat, get rid of food that our body does not need. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमें हेल्प करता है हमारा खाना हज़म करने में और उस खाने को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के जिसे हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, यानी कि जो अनडाइजेस्ट फूड होता है. इफ़ यू कंप्लीट योर शॉर्ट क्वेश्चन, नाउ यू विल स्टार्ट लॉन्ग क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you write down the heading long question. Now start from the question number 1. So question number 1 is what is the function of the following? इसको आपने पॉइंट्स में लिखना है. पॉइंट नंबर 1, द ऑक्टिपल लॉब
Point number 2, the temporal lobe. Point number 3, the frontal lobe. And point number 4, the parietal lobe. ओके, पॉइंट्स में ये क्वेश्चन लिखना है. अब इसके आंसर लिखने का तरीका बेटा ये होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक. आपके पास ये जो दिए गए हैं, आपने इसका क्या हेडिंग डालनी. जैसे फर्स्ट हमें दिया गया है द ऑक्टिपल लॉब. सो फर्स्ट राइट डाउन द हेडिंग द ऑक्टिपल लॉब एंड अंडरलाइन. Okay, now start this definition. The occipital lobe process what we see. तो occipital lobe होता है वो ये प्रोसेस है जो कि हम देखते हैं. The second as it is यही करना है. The temporal lobe control the memories, speeches, process what we hear. The frontal lobe control reasoning, planning, emotion and problem solving. हमारा जो frontal lobe है क्या करता है, कंट्रोल करता है रीजनिंग, प्लानिंग, इमोशन और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है. The parietal lobe the control the movement of recognition and the some sense. Okay, sense वगैरह हमारे कंट्रोल कर रहा है. Now here is question number 2. So question number 2 is what is the function of the heart. हार्ट का फंक्शन के बारे में बताना है. So answer is heart is the pumping blood that the oxygen reach every part of our body. Our heart is the divided into 4 chambers. हमारा हार्ट डिवाइडेड होता है 4 चैम्बर्स में. आपको पॉइंट्स में लिखना है. पॉइंट 1 द लेफ्ट आर्टियम, पॉइंट 2 द राइट आर्टियम, पॉइंट 3 द लेफ्ट वेंट्रिकल, पॉइंट 4 द राइट वेंट्रिकल. 2 points more. Blood that is the reach with the oxygen flow from the left atrium into the left ventricle and then around the body. ओके, जो हमारी ब्लड है डेट द रीच और विथ ऑक्सीजन के साथ जो फ्लो करती हैं फ्रॉम द लेफ्ट वाली आर्टियम से इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल तक एंड देन अराउंड द बॉडी. The second blood that contains little oxygen flow from the right atrium and into the right ventricle and then to the lungs where it is receive oxygen. Okay, if you complete this, now question number 3, how do the muscle work to the bring about the movement in your body. मसल्स के बारे में बताना है एंड उनके वर्क मूवमेंट के बारे में. सो आंसर इज मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स. मसल आर वर्क बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग. Contracting means by the get shorter and relaxing makes them longer as they move. In this way they move the bones in the body. ओके, जो मसल्स हैं जॉइंट्स होते हैं हमारे बोन्स के साथ, ये हेल्प करते हैं हमारी मूवमेंट में. 2 टाइप यहाँ पर हमारे पास हैं जो कि वर्क करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड द रिलैक्सिंग. Okay, if you complete this, now start the filling the blanks. Write down the heading. 5. If you complete your short question answer and long question answers, so come here the filling the blanks. First, write down the heading, fill in the blanks. Now, let's start. The first, the dash send message to the all part of our body. Dash send करता है मैसेज हमारी बॉडी को. So dash is the brain. Second, the occipital lobe, the process what we dash. Occipital lobe वो process होता है जिससे हम देख सके what we see. Now next, the heart is the dash. हमारा heart dash होता है. हमारा heart एक muscle होता है, so it's muscle. Fourth, when you dash in your lungs get bigger as they take in oxygen फ्रॉम द एयर. ओके, जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, ओके, इधर देश में इधर ब्रीथ आएगा एंड द सेकेंड प्लेन इन ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन आएगा. नाउ कम हियर द फिफ्थ, द डैश आर द लाइक अ ट्यूब और हॉर्सेस. सो इट्स इंटेस्टाइन like a tube or horses.
6. The human body has more than dash muscles, 600 muscles. Muscle work by the dash and dash, contracting and relaxing. Okay, now complete this chapter. Do work neat and clean. Till then, the next lecture. Okay, Allah.